हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। खबरें कठोर इरादों की, खबरें अनगिनत हौसलों की, खबरें सपनों की ऊंची उड़ानों की, खबरें सोच बदलने की, खबरें असंभव से आगे निकल जाने की। अच्छी खबर अच्छा करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बनती है। मैं तो देशवासियों से भी अपील करूं कि गुड न्यूज इंडिया भी हमने देखना चाहिए। आम लोगों की खास कहानियां, प्रेरणा, जोश और उम्मीद देती पॉजिटिव खबरें। गुड न्यूज इंडिया, रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इस गीत के बाद ऑल इंडिया रेडियो बहुत रोमांटिक रही है। Head of the trade negotiations, Tata stated दिवस के साथ it has undergone 9 revisions. Kohli, with 903 rating points, is 34 points behind Smith. 900. All India Radio. Namaskar and welcome. You're watching DD News and DD India, and I'm Mark Lynn, and this is a special edition program. It's titled COVID-19 Doctors Speak. So leaving no stone unturned, the government, as we know, is doing its level best to nip the further spread of COVID-19 in the bud. And the 21-day lockdown is currently on for the entire nation. It's to ensure that people don't become active agents of transmission of this virus. By staying indoors and maintaining social distancing, you're preventing, also you're disrupting the chain of transmission, and that, when it's achieved, will break down the virus completely. So the need of the hour is to act responsibly and to not pay heed to rumors. And for this, we're going to bring you a panel of doctors who will be keeping us informed about COVID-19 and how to keep it at bay, keep it away from each one of us. So you can always call us now. Our toll-free number is 1-800-111234. 1-800-111234, and we have an eminent panel with us. We have Dr. Madhur Yadav, is Director and Professor, Department of Medicine at Lady Hardinge Medical College. We have Dr. Suresh Kumar,
HOD and Professor, Department of Medicine at Maulana Azad Medical College. And we have Dr. Naval Vikram, who's joining us via Skype. He's Professor and Department of Medicine at the All India Institute of Medical Sciences. So we'll start with our guests in the studio. Dr. Yadav, tell us a little bit about, why we have to stay indoors. People may be getting concerned, but it's extremely important, right? See, if we stay indoors, the main advantage we get is a social distancing from other persons, as well as if we are carrying it, the organism, we will not be able to spread it to others. Correct. And the second most important thing is that by being indoors, we actually are preventing the spread of the virus in the society. Indeed. But Dr. Kumar, if people are, even within the home, should they maintain some sort of distance even within the home? Is that advisable? That's right. Some of the distance, as advocated by the WHO and other agencies, that you have to maintain a distance of 1 meter. That is very good for the prevention of this spread of virus. But because we have in our society, we are so much frequently mixing. Right. We are mixing, and we have the living space is less as our counterpart in the developed country, though the rich nations. So we have if you see the population per house is much more. We are overcrowded, we are more friendly, and we are more interacting than other nations. So this is very important, but we must maintain a considerable distance of 1 meter. And Dr. Naval Vikram, you can tell us a little bit about the hygiene that we should maintain, because that at the end of the day is crucial, to keeping ourselves disinfected in a sense. In fact, we haven't got Dr. Naval Vikram on the line as yet, but we will be joined by him via Skype in a short while. Our toll-free numbers are on your screen right now, 1-800-11-1234. You can call us in and ask Drs. Madhur Yadav and Dr. Suresh Kumar about whatever questions you want about COVID-19. You can ask them both in Hindi and in English. They are willing to answer in either language. So let's keep the talking going, because we need to understand about why we are agents of this virus. I mean, people presume that you're not, you're fine. There's no reason for you to be worried. Why should you be staying indoors? How do we become agents of this virus, Dr. Yadav? See, it has been observed that if an infected person in due course of time of a week or so infects 5 persons with his virus, and in due course of time it becomes to as much as 50 to 100. But once we do social distancing, this thing decreases. So by end of 1 week, we may be infecting 1 to 1.5 persons, and or by the end of second week, we might be infecting only 2 or 2.5 persons. So this means that by having a social distance, by self-quarantine, we can actually prevent the spread of the virus. Right. And Dr. Kumar, when we walk out onto the street, some of us have to go out to buy essential commodities and things like that. What kind of precautions should we be taking at this time when there's a lockdown? I've noticed that, shops too are maintaining social distance. They ask you to maintain, only one person come in at a time. All these things are necessary at this time. Otherwise, people who are going out can actually, get the virus and start spreading it.
Absolutely right, that we must have a proper precaution while we are going to street to buy the essential commodities. जैसे कि आप जानते हैं कि दुकान कम हो गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिफ़िकल्टी ले रहे हैं सब्जी लेने में, दूध लेने में, या मिल्क के जो मदर डेयरी का जहाँ पे आउटलेट है। मैंने देखा है कि आज सुबह मैंने देखा है कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी लोग दुकानों पे जहाँ पे दूध का वो है। तो जब हम ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा संख्या है तो हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए क्यू में भी। और दूसरा ये कि आप जब सरफेस को टच करते हो तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। व्हेन यू आर टचिंग द ऑब्जेक्ट्स यू शुड हैव अ मिनिमल हैंडलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड यू शुड अवॉइड टचिंग विद द अदर पर्सन. And you should remain at a considerable distance with the other person. So our phone lines are open and we have a caller who is calling in. Satyavrat Mohanty is calling in from Pune. Mr. Mohanty, tell us your question. May I talk in Hindi now? Yeah, please, Mr. Mohanty, you speak in Hindi. No problem. Sir, अगर कोई suppose मैंने कोई infected आदमी को टच किया, कोई infected आदमी मुझे टच किया, तो मेरे कपड़े में वो वायरस है, तो वायरस कितना देर तक मेरे कपड़े में जिंदा रह सकता है? अगर मैं कपड़े को धूप में डाला या फिर धोने के बाद क्या वो वायरस मर जाता है? जो नॉर्मल अपन साफ करते हैं, कपड़ा जैसे साफ करते हैं, कपड़ा साफ करने के बाद वो वायरस मर जाते हैं या फिर वो जिंदा रहते हैं? ओके, डॉक्टर यादव आप देखिए, ऐसा है कि आप अगर आपने टच किया, कपड़े पर वायरस आया और आपने धो दिया, धो के आपने सुखा दिया, वायरस once it comes in contact of soap and detergent is being washed off. वायरस खत्म हो गया, आपने धूप में सुखा दिया, कपड़ा प्रेस कर लिया, वायरस खत्म हो गया, वायरस फिर नहीं रहता है उसके बाद। पर आप पूरी कोशिश ये कीजिए कि आपका जो भी कपड़ा है वो इधर उधर कहीं टच ना करे, सीधे बाल्टी में जाए और डिटर्जेंट वाले पानी में जाए। सपोज मोबाइल पे या फिर घड़ी पहना हूं मैं, तो घड़ी पे कितना देर तक अगर घड़ी में रह गया तो कोई मेटल पे कितना देर तक जिंदा रहता है? देखिए, जो मेटल वाला सरफेस होता है उस पर ये 6 से लेकर 7 घंटे तक जिंदा रहता है। तो आप कोशिश करिए कि हाँ बताइए, आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो घड़ी है उसको आप स्टेरिलाइजर से उसको एक बार धो दें, डिसइंफेक्ट कर दें, आपके जो कड़ा है उसको कर दें घर में जाने से पहले। Okay, I think we've got the answer to that question. We are now joined by S.V. Hari, who is joining us on the phone line from Kolkata. Mr. Hari, give us your question. Actually, I just want to ask you one question regarding this, because now the hand sanitizers are not available in the market. Okay. So how much is the Dettol will be helpful in this condition? डॉक्टर कुमार, आप बताइए। आपने पूछा कि हाउ मच इज इफेक्टिव डिटॉल इज व्हेन सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर नॉट अवेलेबल। यू आर राइट, दिस डिटॉल इज आल्सो अ डिसइंफेक्टेंट एंड इट इज इक्वली इफेक्टिव बिकॉज इट्स mainly used for most of the wounds and other cuts and other where we want to disinfect the skin or surface. It's effective, and you can also dilute it. And if you don't have this facility, you can just wash your hand with the soap and water. That is also very good protective mechanism. Okay, so equally effective is the soap and water. Okay. Our next caller is Ravinder. So we're keeping the calls coming in. Ravinder is calling in from Indore. Ravinder, give us your question. हेलो सर। जी मैं रविंदर सिंह बोल रहा हूँ इंदौर से। जी बोलिए। जैसे हमारा कहीं मान लीजिए बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर से जो कपड़े पहन के आते हैं, क्या बाहर उसको उतार कर क्या दूसरे कपड़े पहन के अंदर आ जाए? कैसे करें इसके लिए? मान लीजिए जरूरी काम के लिए जाना पड़ता है तो। So I think this question has been answered, Mr. Yadav, Dr. Yadav. देखिए, ऐसा है रविंदर जी, यदि आप किसी इन्फेक्टेड जगह गए हैं या आप कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर कि कोरोना वायरस वाले कोई पेशेंट है, तब तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही आप घर के अंदर आएं, आप अपनी शर्ट को उतारें, उसे बिल्कुल गोल करके और अपने पैंट वगैरह और अंडर गारमेंट्स को करके एकदम सीधे वॉशिंग मशीन में डाल दें। और घर में घुसने से पहले आप हैंड सैनिटाइजर से आपको अपने हाथ अच्छे से धोएं और साथ साथ अपनी घड़ी और बाकी कड़े वगैरह सबको धो लें। लेकिन और यदि आप नहीं गए हैं तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, आप आ सकते हैं।
Our next caller is Rajiv calling from Telangana. Rajiv, give us your question. Sir, my question is that the coronavirus which is there now, for who are the infected person or the person who want to prevent, they can use the water which they drink, hot water, using chlorine water. It may be effective or not. It's my doubt, sir. Okay. If it's effective, then the government can announce the people to have the water by taking hot water in chlorine tablets, so that which is present at their throat for 4 days, it will be, will it kill or not the virus? Dr. Suresh Kumar, does hot water with, does it kill the virus? Very good question. Many of the patients are coming to my hospital also, and they are also asking whether steam or hot water or the hot drinks or coffee is helpful, or soups. They are helpful in the coronavirus fight. There are no such study, and lot of people in the China have used hot water, and but there is no such study that hot water or hot drinks can kill the virus. It's not documented scientifically, and no such study has proven that the hot water actually kills the virus. Right. And what about steam inhalation? Does that help? Steam inhalation, if patient have a sore throat or patient have cough, it definitely help in the symptomatic improvement of the patient. It's otherwise also, if any patient who have the respiratory symptom or patient have cough or soreness in the throat, it improves significantly. Okay, Sanjeev Thakur is now joining us from Madhya Pradesh. Sanjeev, give us your question. जी, मेरा क्वेश्चन ये हमारे जिले में या हमारे मोहल्ले में या हमारे परिवार में अगर हो गया और उन तक पहुंचाने क्या प्रिकॉशन? I don't. Did you get the question, sir? No. Could you repeat your question, Sanjeev ji? संजीव ठाकुर बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। मेरा प्रश्न, अगर हमारे मोहल्ले में या हमारे आस पास में या हमारे किसी परिवार को हो गया, उनको अस्पताल दिया, उसके बाद ये पूछना चाहते हैं कि इनके मोहल्ले में या इनके पड़ोस में किसी को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो गया तो ये क्या सावधानी बरतें हैं? जी, आप बताइए। आपको यदि आपको ऐसा लगता है कि उनको कंफर्म्ड है, या दो तरह के पेशेंट आजकल हमारे पास आते हैं। एक तो वो जो संभावित कोरोना से सस्पेक्टेड केसेस कहते हैं हमको, दूसरा है कि कंफर्म है, इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री है, पेशेंट का लेबोरेटरी में पीसीआर से उसका कंफर्मेशन हो चुका है। यदि ऐसे पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल जाकर के और टेस्ट कराना चाहिए। पर बहुत सी आजकल अफवाहें ज़्यादा हैं कि पेशेंट को कुछ भी खांसी और कुछ भी बुखार हुआ और कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, फिर भी लगता है कि भाई इसके घर में कोई पेशेंट हो सकता है। जैसा कि हमने देखा है कि दिल्ली में नर्सेज और डॉक्टर को लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि इनको कोरोना हो सकता है। ऐसा नहीं है, सारे डॉक्टर या नर्सेज या हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल हैं वो बहुत सावधानी बरतते हैं, वो पूरा ध्यान रखते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, और वो पूरा प्रॉपर प्रिकॉशन के बाद ही अपने घर पे या मोहल्ले में या स्ट्रीट में अपने में जाते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि जनरल पब्लिक के लोग या वो पेशेंट जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं, हम डिस्चार्ज तभी करते हैं तब कोरोना वायरस नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव होने के बाद यदि कोई आपके पड़ोस में आता है, आपके मकान के पास आता है या एक ही बिल्डिंग में आता है, तो उससे समाज में कोरोना वायरस फैलने का खतरा नहीं है। Right. We are going to take a short break, but the number is on your screen right now. In fact, it has just gone out, but that number, please do keep calling in with your queries regarding the coronavirus. We have Dr. Madhur Yadav and Dr. Suresh Kumar with us in the studio to answer your questions. We're going to take a short break. Stay with us. दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना।
इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो, हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। Welcome back. You're watching our special program, Doctors Speak. Doctors are talking to you about your questions regarding the coronavirus, why you need to stay at home, how you can keep yourself safe. All the questions that are coming onto your mind, you can always ask them. Dr. Madhur Yadav and Dr. Suresh Kumar are with us in the studio. Dr. Yadav is Director Professor, Department of Medicine at Lady Hardinge Medical College, and Dr. Suresh Kumar is HOD, Professor of Department of Medicine at Maulana Azad Medical College. The number is on your screen, 1-800-11-1234. Easy number to remember, just 1234. Dr. Yadav, let's try and understand about why this virus is spreading so fast from stage 2 to stage 3. So that, you know, people, we have just 600 plus cases in our country, and, you know, the entire country is locked down. People are saying, you need to know, you know, how quickly it can spread from 600 to, let's say, 60,000 or something like that. It's a very contagious disease, yes. A very contagious disease. Though the mortality is less, but it is very contagious, and especially since it has now been said to be airborne also. Otherwise, it spreads by fomites. Yes. Once it spreads by aerosols also. By aerosols also, and a person is talking by fomite, by sputum, it falls onto the ground, and a person, if by mistake touches the surface or some area, and then he touches his eyes, and or his nose, it may go down. And the most important thing is that it has been observed, and a study is there, that we touch our face 3,000 times a day. Imagine. So it is better to avoid touching the face, to wear a mask if we are going near a patient of corona positive, and we should do social distancing, what Dr. Suresh has just talked about. And by social distancing and maintaining a distance of at least 3 to 4 feet, we may be able to at least save ourselves from the fomite which a person might be transmitting if he or she has a coronavirus infection. Dr. Kumar, you know, what we are running on our screens are basically what a quarantined person should be doing. You know, when there is a person with home quarantine, of course, that we are not actually quarantining people, we are isolating them. So these actually require, these are a much higher grade of isolation that we are flashing on our screens. But for a person who's isolated, what kind of activities can they do at home safely? They can work on their computer, they can work on their smartphone, they can do their own activities, they can listen to music, and they can read books, and they can do their common household activities. There is no risk in that. Let's get our next caller on line now. Hanan is joining us from Srinagar. Hanan, please ask your question. एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर दो ही मतलब कोई मतलब कोविड-19 में इन्फेक्टेड है जी, मतलब वो कॉफिंग वगैरह उसके पास है, मतलब ये वायरस जो है एयर में रहता है या कोई सरफेस के पास रहता है? Okay. In fact, I think Dr. Yadav, you had already answered that, but maybe in Hindi you can tell them about you know, how the virus spreads. Is it in the air also? Is it spread in the air as well? That's the concern. आनंद जी, ऐसा है कि जो वायरस है ये ड्रॉपलेट एयर से भी फैलता है और सरफेस ट्रांसमिशन भी है, तो इसमें दोनों बातें हैं, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की इसमें इम्पोर्टेंस है, और जो सरफेस होता है कहीं का भी उसको आप चुने में थोड़ा परहेज करें.
दूसरा मैं डॉक्टर यादव ये जो इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो वायरस एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, लंग्स में है, जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वहां से ये वायरस बाहर निकलता है। जब हम सांस लेते हैं या हम छींकते हैं या थूकते हैं तो वो सारा वायरस पूरे उसमें फैल जाता है, सराउंडिंग में फैल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वायरस जो यहाँ से निकलता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग से, फेफड़े से और नेजल सिक्रेशन से, सलाइवा से वो वातावरण में फैलता है और फिर वो वातावरण में काफी टाइम तक जीवित रहता है और जो भी आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसको इन्फेक्ट करता है। So you keep a safe distance, is that good enough, or do you have to wear a mask? Because, you know, this concern about the virus spreading in the air, maybe, I mean, how does a mask protect you, Dr. Yadav? See, wearing a mask near a corona positive patient is a must. Otherwise, wearing a mask in a place where it is not infected and in house is not advisable. हमने देखा है कि मास्क का मार्केट में इतना भारी कमी है कि जिन लोगों को मास्क की एक्चुअल जरूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों को शॉर्टेज हो रही है, नर्सिस को नहीं मिल पा रहा है और जो बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है वो मास्क बाजार में इतना ज्यादा कमी आ गई है इसकी, क्योंकि ऑल पर्सन डू नॉट रिक्वायर मास्क एंड 95 मास्क का जरूरत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ही है। और दूसरा ये है कि आप ये कई बार मास्क लेते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं, उससे और ज्यादा खतरा रहता है कि आप फेंक देते हैं। हमने देखा बहुत सारे लोग मास्क यूज करते हैं और स्ट्रीट पे ऐसे ही फेंक देते हैं। दिस द प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ मास्क शुड बी देयर एंड इट्स बेटर इफ मास्क इज नॉट अवेलेबल यू कैन यूज आपका हैंडकरचीफ यू कैन यूज, आप अपना रुमाल यूज कर सकते हैं, वो भी काफी जो घर में है वो कपड़ा या साफ कपड़ा या रुमाल यूज कर सकते हैं। It is an important point, Dr. Yadav, that Dr. Suresh Kumar has raised about the proper disposal, because now people are utilizing a lot of disposable things. You know, everything is disposable, and you know, people presume that they've just thrown it out and that's the end. But that's from where the virus spreads, isn't it? You can maybe throw some light on that, Doctor. देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आपको खास तौर से ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट्स का अगर आपको को भेजना हो या टिश्यूज हो या मास्क हो, इसको अच्छी तरह रैप करके आप इसको एक अच्छे डिस्पोजल में इसको पैक करके रख दें एक कोने में, मोस्ट प्रॉब्ली घर के बाहर, और उसको ढक के रखें ताकि फिर इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मास्क आर मेंट फॉर डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स। प्लीज डोंट यूज डिजाइनर मास्क, दे आर नॉट मेंट फॉर यू एट ऑल। Okay, Veenu Verma is calling us from Kanpur. Veenu Verma, please give us your question. Veenu Verma? हेलो सर। Yes, Veenu, give us your question, please. सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मार्केट चूंकि खुलती है थोड़े बहुत टाइम के लिए, तो मार्केट से अगर कोई सामान लाते हैं तो वो तो कई लोगों ने छुआ होता है, तो हेलो। Yes, go ahead, Veenu, we can hear you. हाँ, ये सर, तो फिर हम उस मार्केट से जो सामान लाते हैं तो उसको कितनी देर तक बाहर रखना है, या फिर उसको मतलब जैसे सब्जी भी है उस पे भी हाथ लगते हैं जी, तो फिर उस सब्जी को कितनी देर बाद यूज करना है या कैसे यूज करना है, वो हम जानना चाहते थे। डॉक्टर सुरेश कुमार, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा वर्मा जी कि सब्जी हम खरीद रहे हैं या कोई भी दैनिक यूज की जो सामान हम मार्केट से खरीद रहे हैं और उसमें आपको कितना रिस्क है। अभी तक देखें कि बहुत सारे जो स्टडीज हैं, इंडिया में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। अभी जो संख्या है, मरीजों की जो संख्या है वो क्लस्टर तक ही सीमित है या उन्हीं में सीमित है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं, जो विदेश से आए हैं या उनके कांटेक्ट में आए हैं या एयरपोर्ट से उनको संपर्क हुआ है। गांव में, मोहल्ले में या शहरों में, कम्युनिटी में अभी इस वायरस का इतना स्प्रेड नहीं है, तो आपको कोई जरूरत डरने का नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड जब होता है, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं और तब हम ऐसी स्थिति में बाजार में जाते हैं जहां पे हम सब्जी खरीदते हैं, जहां पे आटा, चावल या दाल खरीदते हैं, तब ये रिस्क होता है। अभी हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो समस्या है वो इतनी नहीं है। राइट, तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए। आप मान रहे हैं कि हर एक चीज इन्फेक्टेड है, ऐसा नहीं है। In fact, that is the reason why we are at home, is to prevent it from getting into the community, because once it gets into the community, it spreads like wildfire, and that is the reason why we are this home quarantine. I mean, this isolation is very necessary, and social distancing. Dr. Yadav, you know,
this is a concern about where the products that you have bought have been. I mean, who knows where they've come from. At the end of the day, how many people they have touched, how many people have used proper hygiene, how long does the virus survive on them. You know, some people say it survives long on cardboard than on other surfaces, all these kind of concerns. What kind of advice would you give people? देखिए, once lockdown has been complete, the most important thing people were worried about touching of the newspaper. It has gone. No newspaper is coming nowadays. Secondly, once you are bringing your milk packet, wash it out properly, and then cut it from end, pour the entire milk and throw away the plastic part. Secondly, you should try to wash things which are possible to be washed off. Otherwise, as Dr. Suresh has already mentioned, it has not yet entered into the community. It is safe to use these products. Okay, so since it is not in the community, we should not actually lower our guard, because our whole purpose is basically to prevent it from coming into the community, and that is why we have to maintain the highest standards of hygiene, maintain social distancing, because that's the only way we do not become agents of the virus and help it in its transmission. In fact, we become warriors of against the virus and prevent it from spreading at all. Dr. Suresh Kumar, people must be concerned. So basically they are concerned about various things about this virus. It's unknown to them. But now research is going on. People are figuring out that, this is SARS-CoV-2. We know that SARS-1 did not have an impact on India for various reasons. And people are hoping that SARS-CoV-2 also may not have that kind of impact. Can you help us understand whether that is the fair assessment to make? Most of people ask what type of virus is, how it spreads, how dangerous, what is the structure, and how it impacts the society, because it's if you see that once it started from China and how rapidly it has evolved, and it has infected almost all the nations, all the countries of the world, and the situation is so grim and so bad that everything is locked down, and the life of people are compromised, and health facility of most of the countries are completely they are not able to manage their patients, and they don't have ventilator beds, ICU beds. I'll stop you there, Dr. Suresh, because we've got a phone call coming in from Raj Kumar from Gorakhpur is joining us. Raj Kumar, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार जी, बोलिए सर। 21 दिन के लिए लॉकडाउन है जी, ठीक है। अभी जैसे रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना में काफी लोग जो है लॉकडाउन के टाइम में डिप्रेस हो गए थे वहां पे, तो ऐसा क्या किया जाए, क्या क्या सावधानियां रखें ताकि जो लोग 21 दिन तक लॉकडाउन में हैं वो जो है डिप्रेस ना हो? डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर यादव, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप फिर से अपना क्वेश्चन पूछिए। लॉकडाउन 21 दिन तक है सर जी जी। तो क्या होता है कि एकदम से जब हमारा हैबिट चेंज होता है, जो हमारी आदतें हैं, रोजमर्रा के काम है, वो चेंज होते हैं, तो चांसेस होते हैं सर कि हम डिप्रेस हो जाए। तो ऐसा क्या सावधानी बरतें हम कि जिससे डिप्रेशन वगैरह ना हो? जी जी, चाइना में काफी लोग डिप्रेस हो गए थे। जी जी, डिप्रेशन की बात हो रही है। आप पूछना चाहते हैं कि क्योंकि हम डेली ऑफिस में जाते हैं, डेली अपनी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम सैर करते हैं, हम पार्क में जाते हैं और हम खेल कूद की गतिविधि में भाग लेते हैं। आज जैसा कि आपको कहा गया है कि आप लॉकडाउन में हैं, घर के बाहर मत निकलिए, घर से बाहर मत जाइए, तो बहुत सारे स्टडीज में है कि डिप्रेशन का है। उस डिप्रेशन से बचने के लिए आपको योगा कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं और अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। घर पे आप व्यस्त रखेंगे अपने क्रिएटिव एक्टिविटी में तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन तभी आता है तब आप अकेले हैं, यदि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका पूरा घर बहुत बड़ा घर है और अकेले हैं। और कुछ लोगों ने मैंने सजेस्ट किया है कि यू कैन आल्सो प्ले विद द पेट्स, इफ योर पेट्स इफ यू आर अलोन, दैट प्रिवेंट्स द डिप्रेशन। राइट, डॉक्टर यादव आप भी कुछ बोलेंगे इस पर? हाँ, देखिए ऐसा है कि
राजकुमार जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसमें कि हम चाहते हैं कि जो भी इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए, समाज में ना जाए। ये एक अमीरों की बीमारी है, फ्लाइट से आई है, अगर हमारे गांव में चली गई तो इस समाज के लिए बहुत बुरा होगा। इसमें आप अपना पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बनाए रखें, खूब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं जैसे डॉक्टर सुरेश ने बताया है, और साथ साथ आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। Right, we're going to take a short commercial break at this point in time, but we'll come back with all your questions. You can keep asking those questions on 111234. 1-800-111234 is our toll-free number. We're coming back after this short break. Stay with us. You're watching Doctors Speak. ये वही लोग हैं। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। Welcome back. You're with Doctors Speak. This is a special program. It's clearing your doubts on COVID-19 and the situation, but from the medical point of view. So keep your questions coming in. Our number is on your screen. It's a toll-free number, 1-800-111234. We have with us Dr. Madhur Yadav, Director and Professor, Department of Medicine at Lady Hardinge Medical College, and Dr. Suresh Kumar is Professor and HOD, Department of Medicine at Maulana Azad Medical College. Thank you once again, doctors, for being with us. So we have been talking about various issues. Now, the last question brought up some interesting points. Dr. Yadav, the point is that people have been suddenly put into a situation where they have to stay at home when they're used to a different lifestyle. This is causing some mental changes in their, I mean, maybe a psychological situation, and some of them are not able to adjust so easily. People have been advising yoga and things like that, but what else can they do? Tell us. Sir, actually, it has been very difficult to stay at home and even that for 21 days in house where you have been running around. Right. So probably a person becomes depressed, and that is all. But positive thinking, yes, will take him out from this. Okay. In due course of time. We have Archana Srivastav who's joining us from Prayagraj. Archana, आप अपना सवाल पूछिए. हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी पता चला है कि करेंसी में भी वायरस है। करेंसी में भी? अच्छा, ठीक है। हाँ, जो नोट है और जो करेंसी है उसमें भी वायरस है, तो जैसे उसको कैसे किया जाए स्टेरलाइज फिर? जी डॉक्टर सुरेश कुमार जी। अर्चना जी, ऐसा अभी कोई स्टडी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि करेंसी में ये इतना लोगों ने करेंसी यूज की और इतना लोगों को उससे इन्फेक्शन हुआ। ऐसा WHO की कोई स्टडी या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी की कोई भी ऐसी स्टडी अभी तक नहीं हुई है। पर देयर आर ऑल स्पेकुलेशन, देयर आर ऑल रूमर्स, ये सारी अफवाहें ज्यादा हैं। सच्चाई कितना है हम वैज्ञानिक तौर पे हम नहीं कह सकते कि भाई 1000 लोगों ने रुपया यूज किया और उसमें से इतने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, ऐसा कोई स्टडी नहीं हुआ है। ये सब खाली रूमर्स हैं।
दूसरा ये कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी रिकमेंड करते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को आप यूज कर सकते हैं. इफ यू आर मोर स्मार्ट नाउ डेज यू शुड अवॉइड एंड यू शुड यूज मोर डिजिटल करेंसी रादर देन द कन्वेंशनल वन. लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है. जरूरत पड़ती है. रिस्क इज नेग्लिजिबल. Okay. It is not documented. It is just a speculation or just a thinking that this may be happening, but there is no such studies proven by science. But good hygiene, like washing your hands regularly, will also help. Yeah. But definitely it is not recommended, because if a lot of infected people are handling the currency, it may be the potential source of infection. You are correct. You should avoid it. You should use digital transaction. Gee. Okay, so we wait for our next caller. We can talk a little bit about that, because moving away from that kind of a currency to a digital economy is actually in the interests of health as well, isn't it, Dr. Yadav? You are right, because see, howsoever low it may be, but yes, there might be some, unless and until it is being proven by studies, it may be infectious. We don't know, but once we start using digital payment, these things are being put off. And secondly, we can actually increase our test collection also by using digital payment, because things becomes very, very clarified. जी. नीरज कुमार is joining us from Lucknow now. नीरज, आप अपना सवाल पूछिए. जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस बता रहे हैं जिनमें कि होने के चांसेस हैं, तो इनको कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, लेकिन वो अंदर मेडिकेशन है, दवाई को लेके मैनेज करते हैं, तो क्या वो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में काउंट होंगे? प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को मैं डिफाइन कराना चाह रहा था, जो आप कह रहे हैं कि जैसे कि your question is not clear. I think आप दोबारा पूछिए. I think basically is asking about conditions. There are certain categories of people who are pre-existing conditions. Pre-existing conditions की बात हो रही है. Yeah. Somebody who is somebody who is taking medicine for high blood pressure. Absolutely. अच्छा, देखिए ऐसा है, जो भी पेशेंट जिसमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, patients who are taking anti-cancer drugs, and patients who are having heart failure, patients who are having kidney disease, these are all patients who have got increased risk of death, increased risk of being affected by virus, because the immunity becomes low as far as kidney disease and diabetes is concerned, as well as those who are using immunosuppressants in an oncology case. जैसे डॉक्टर यादव ने कहा, उसके अलावा मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये सारी जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं, और एसोसिएटेड इलनेस है उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है. नॉर्मल मोर्टेलिटी 2 से 3% है. यदि किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कैंसर है, सीकेडी है, डायलिसिस पे पेशेंट है, या कोई स्टेरॉइड ले रहा है, या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशन है, लीवर का सिरोसिस है, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल को यूज करता है और उसकी वजह से उसके लीवर में प्रॉब्लम है, ऐसे कंडीशन में मोर्टेलिटी 6 से 8% है. So what precautions should people who have these pre-existing conditions take? Because there are a lot of people who have diabetes. Yes, very good. For instance, they must control their diabetes status. If blood sugar level are high, they must take more doses of the oral hypoglycemic agent. If they are on insulin, they must tightly regulate the insulin doses. Their fasting and postprandial blood sugar level should be within the normal limit, and they should follow the instruction of doctor. They should take the proper medicine. They should not be exposed to the crowded surrounding, as we are already taking all these precautions. And if patient what about boosting their immunity? Is there some way you can boost it? Because in any case, I think that some of them they are prescribed. A lot of people are taking Chyawanprash and this multivitamins and the food supplements and proteins, but there are no such study that these Ayurvedic preparation or some tonics which are used in the chemist shop that they boost the immunity. There is no such immunity booster. Okay, fair enough. Let's listen to what Rahul has for us. Rahul from Madhubani and Bihar, आप अपना प्रश्न पूछिए. सर, मेरा एक प्रश्न है कि हमारे यहाँ भी नवरात्रा चल रहा है सर. हमारे यहाँ नवरात्रा चल रहा है, तो उसमें कुछ यंग्स जो हैं, जो वो उनका कहना है कि आप जो साउंड में सॉन्ग चला रहे हो वो ना चलाएं, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है,
या कुछ भी क्रिएट हो सकता है। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए सर? ये कह रहे कि नवरात्रा में क्या आपको, कैन यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन, दोबारा प्लीज पूछिए। जी बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ अभी नवरात्रा चल रहा है हमारे यहाँ, तो उनमें जैसे भजन चल रहा है या मंत्र उच्चारण हो रहा है, तो उनमें कुछ यंग्स कहते हैं कि नहीं ये नहीं चलना चाहिए और साउंड नहीं चलना चाहिए, ज्यादा साउंड में नहीं चलना चाहिए, इससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं है, ये सबका साउंड का इसमें रिलेशन नहीं है। कोरोना वायरस में साउंड का कोई रिलेशन नहीं है। यू कैन डू योर ऑल एक्टिविटीज, योर फास्ट, नवरात्रा, you can do it normally. There is no risk at all. So there is no question of sound carrying the virus at all. और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। ये नहीं है कि आप ग्रुप में सब कर रहे हैं, आप अकेले कर सकते हैं पर ग्रुप में नहीं। That's an interesting point. I mean, I never thought of it, but it's come up in one of these discussions that perhaps the virus could be carried by sound, but it does not carry by sound. It's only being carried by aerosols and droplets. So that's the only way that it can be carried. So I think we are coming closer to the end. So if we have any more questions that are coming in, please bring your questions in. But Dr. Madhu Yadav and Dr. Suresh have given us a clear idea about how we should keep ourselves free from getting this virus, from becoming agents of this virus. Dr. Yadav, let's understand about children and the association of parent with child in a situation like this. Some people feel that a child is not ready to understand the gravity of the situation, and they may not tell them the whole truth. Perhaps it's best to tell the story as it is, isn't it? देखिए ऐसा है कि from Wuhan study, it is clear that the children are affected less as compared to adults. Probably because it takes time for immunity to develop in them, and secondly because children they tend to get other respiratory infections which the virus is somehow similar to it. So they get an innate immunity in them. That is why children are affected less as compared to adults. But yes, transmission from mother to child have been observed in two infants, and that was at the time of birth. But how it actually translates now has to be seen. And children are showing more immunity to this virus, but they are carriers of this virus, and they are actually, when they meet their grandparents, they can transmit it to the grandparents. That's also an important point when you're staying at home. That's very important, because children दादा दादी के साथ जब खेलते हैं तो ओल्ड एज में इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओल्ड एज में इसका दुष्परिणाम और इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 6 से 8% है, क्योंकि ओल्ड एज में एक तो एसोसिएटेड इलनेसेस होती हैं, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को COPD होता है, किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस पहले से ही होता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब एक्टिविटी कम करना चाहिए और बच्चों को थोड़ा educate करना चाहिए. Health education is very important. Children activity has to be restricted, and they had to be told that what is the actual drawback of this. Right, and Dr. Yadav, to keep yourself, to boost your immunity in a sense, we were talking a little earlier about methods to do that. One is to eat good food, decent, a good nutritious meal. The other is also to keep yourself hydrated, isn't it? Well hydrated, good food, good sleep, and a boost of exercise. But we can't exercise too much at home, so what kind of exercise can we do? Boss, we can do yoga. That's the only thing left. Yeah, that's the only thing left. Or start doing aerobics or something like that. Right. And one thing I would like to mention is that please don't take medicines by yourself. You should consult a doctor in this case for taking any type of medicine or for whichever condition you would like to have. Right. I've been told by my producer that since we started this program late, we are extending it for another 7 minutes. So please allow those phone calls to come in. We still have 7 minutes to go. The number is on your screen, 1-800-11-1234. You can call in with your questions to Dr. Madhu Yadav, Director, Professor, Department of Medicine at Lady Hardinge Medical College, and Dr. Suresh Kumar, HOD, Professor, Department of Medicine at Maulana Azad Medical College.
Dr. Kumar, so we are in a situation where, you know, there is a fear that this virus can reach stage 3. We are keeping it out of stage 3 to the best of our ability. People need to understand the importance of their role in not allowing it to spread into society, because we are a densely populated country. I mean, and each part of that's why I mean the entire country is locked down, isn't it? That's right. It's a very tough decision to take, but the government has taken this decision in the interests of the people. People need to understand the importance of that, sir. Yeah. This is the great step that our country has done, because it's very difficult to keep people inside the home, and the number of persons actually, and you see the problem is so bad in other countries where they're not restricted the movement of the population. We have very bad experience with the China and other countries and European countries, Spain. You can see that in Italy and Spain, yes. Iran, that large number of casualties are there, and US, if you see that they have only a few ventilator beds, and now they require 4,000 to 40,000 ventilator per day. So our resources are limited, and if the magnitude is the problem is so huge, so big, that the government of India has taken very early step, very bold and very conclusive step, that so far we are able to control this spread of disease, and with all efforts of all people, all community, all groups and all individuals, we are able to contain the virus in a better way, and the steps taken by the government are, I must praise the leadership for this. Dr. Yadav? See, we are actually, you know, we are much ahead than what China and Italy and the other European countries were. We started this exercise way in the month of January, much earlier, when people from our institutes were sent to various places to see the preparation for this virus. Imagine way back in January, and that is how we have actually contained it, and it has been nice on the part of the government to put a lockdown, so that whatever has happened, we should actually be prevented from the outburst of the local community. Right, and we also need to understand that, you know, I mean, this is a virus that affects the lungs, and I mean, you would require to have a ventilator if it reaches that bad stage, it reaches the advanced stage, and if it reaches that stage and there are no ventilators available, the chances of you surviving are very low. So that is the reason why, I mean, there is a limit to the number of ventilators one can have. We can't have the entire country getting, you know, this virus. It will be catastrophic. So it's better to prevent it right now. There is also, you know, people argue that most of the cases are mild. You know, we are not reaching that particular stage. Tell us, Dr. Kumar, about, you know, the difference between a mild and a serious case, and how often does it become a serious case? You see, if you are dealing with the mild case, these mild cases are one who are moving around, they don't have fever, they don't have respiratory symptoms, they don't have respiratory compromise. On the other hand, if patient have respiratory distress, or patient have high-grade fever, or patient have dehydration, problem with the kidney functions, they go into multi-organ failure. They, along with the respiratory compromise, they have the renal failures, they have the problem in the liver, they have the low blood pressure, and they just become unconscious. Their oxygen saturation becomes so low that they become comatose, and they require ultimately ventilatory support, because without ventilatory support, it's very difficult to control this situation. We have the limited ICU beds, and most of these, 80% of these patients are mild cases. Yes. 80 to rather 90% are they don't require any hospitalization or any expert opinion, but 2 to 3% may require. And that 2 to 3% of a population of 1.3 billion is quite a huge amount. Yes, Dr. Yadav, you want to give some final words? Yes, I would like to add something. See, it's a respiratory virus which affects our respiratory system. Okay, as far as it is between our nasopharynx, oropharynx, it's all right. Moment it comes down, it becomes severe, and moment or इससे नीचे आता है, it becomes very severe. What we have got septicemia, multi-organ dysfunction. So it is better if we just control it up to the upper surface and up to the lungs only. Beneath that, it is very serious. Right.
So we'll thank our doctors, Dr. Madhur Yadav and Dr. Suresh Kumar, for helping us understand the importance of the lockdown and why we need to stay at home and what we need to do there to prevent us becoming agents of transmission of this virus. This has to continue, otherwise we could just be lighting a fire. And we need to understand how important it is to be responsible citizens, stay at home, stay safe, and be a responsible citizen by doing that. And we leave you with this particular video, which gives you some understanding of what you could do when you're at home. Thanks for watching. Namaskar. हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आइंदा 3 माह के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो इजाफी चावल या गेहूं और 1 किलो दाल देने का ऐलान।